Uh, yeah, good afternoon, everybody. This is Dr. Maulik Shah, MD Pediatrics from Malad, Mumbai, from Vatsalya Child's Clinic. Uh, Today's topic is quite intriguing and quite interesting, and a lot of parents and parents and new parents and old parents, everyone are so much, startled by this topic, like fever and lot of vaccinations. So it's quite confusing, uh, quite something which is always disturbing to the parents. So let's clarify most of your doubts. And initially, let me just give you some small introduction about this topic. Like, what is fever? The people are so much worried कि अरे fever आ गया like 100 101, and the blood pressure of the parents starts shooting up. And so the pediatricians, right, because they keep on calling, अरे sir ये 101 का fever आ गया, what to do, what next to do, and all those things. So let's simplify the things. See, fever is, just a second. Sorry. So why fever, and what is actually the fever because of? क्यों आता है बुखार? See, इंग्लिश, when we speak in English, बीमारी एक अलग रहती है और उसका symptoms कुछ अलग रहता है. So we call fever as an illness and the disease as something which has caused fever. So many of the times any kind of infection can lead to fever. So basic aim of treating from the pediatrician is to treat that infection rather than treating the fever. Once the infection is under control, yes, fever is going to get controlled on its own. And one very important thing, why fever? So basically speaking, fever is a protective mechanism of our body. So whenever our body incurs some kind of infection, the body by themselves raise the temperature of the body to such a level that the infection causing microorganism gets killed. So fever is to some extent good for the body. So the very first important thing you need to remember is, do not get scared of fever. Yes, if the fever is high, we need to bring the temperature of the body to the regular level or normal level. That's true, but not to be getting scared of fever. Okay, this is first thing to be remembered. Now coming to the other part of our talk, that is about the vaccination. So I'll give you a brief introduction about the vaccination. टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इंजेक्शन या कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो देने से बॉडी की अंदर से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है वो पर्टिकुलर बीमारी को लेकर. ठीक है. सो इसका एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है ना, कि जो जंतु से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये इन्फेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, पर्टुसिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, चिकन पॉक्स, वो फिर मीजल्स, गोवर, अभी वो रुबेला का वैक्सीन चल रहा है, रुबेला. ये सब जो वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे जो बीमारी होने वाली रहती है, वो वायरसेस या वो बैक्टीरियाज को लेकर उनको कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जिनसे उसकी बीमारी करने वाली जो क्षमता है उसको कट किया जाता है, मार दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, और अपनी बॉडी में जो रिएक्शन पैदा करने वाली जो क्षमता रहती है उसको एनहांस कर दिया जाता है. So that what happens is, when this vaccine goes in our body, it causes reactogenicity of our body. It improves the reactogenicity of our body so that our body build up the immune system against that particular infection. Whereas the disease causing property of that organism has been killed or cleared, so that the disease doesn't happen, but our body get immune to that particular organism. So in future, whenever our body acquire that particular organism to cause infection,
we are protected because of that vaccine which has induced the protection in our body. Okay, so this is very brief summary about vaccinations and fever. So now let's take up one by one all the questions and queries, and we should start solving it. Okay, yeah. So first question we would like to take is from Nilesh Shah. टीका प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया जाए या सरकारी हॉस्पिटल से? या सी, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल दोनों में जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ही है. So there is no confusion behind that. Few of the vaccines are available in government hospitals, and in private hospitals all of the vaccines are available. The only thing is like in government hospitals, the only vaccines which government have approved to the hospitals are being given. So those are free of cost to you, but those are in limited numbers. Like DPT होता है Penta at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, 3 doses. BCG at first at birth, 9 months vaccine of measles, 15 months MMR, 9 months which is now going to get replaced by MR, and 18 months DPT booster, and then 5 years DPT booster 2. These are the basic vaccinations which are being provided at government hospitals or clinics. Now coming to private hospital, there are lots of other newer vaccines which are available. I won't say newer, but they are new. Those are the vaccines which are just available only in government private setup, not available in government because government can't afford such expensive vaccines for most of the population, because we have exploded population like anything, and government is always in debt to but still government is taking few steps like rotavirus. They have started in few of the states as a pilot project. Now they have initiated this MR vaccine MR campaign. So government is taking some steps, but few of the medicines are such which are not available with government doses. So those all vaccines you have to take it from private hospitals. Coming to the part, few of the queries like वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, देना है कि नहीं देना है. Most of the vaccines are like even those for the private hospital vaccines, those are recommended by IAP, the Indian Academy of Pediatrics. So those are recommended for the child, but it has not been given by BMC because the cost factor is very high and they are not approved yet. Okay, so quality wise both are same. You can decide which one you need to take in government hospital, whether you need to take in private hospital. Coming to the other part, one thing what most of many of my patients I suggest them is like you can take the mandatory vaccines which are being provided by BMC. You can take it from BMC or government, and rest of the vaccines you can take from private clinic or private hospitals. Okay, then it's your choice. If you wish to take all in private, all in BMC, it's your choice. Okay. Uh, Another question is from Arjit Singh. बेबी के लिए नोज में नेसोक्लियर मशीन लगाई जाती है जुकाम होने पे, इसके बारे में जानकारी दीजिए. मेरा बेबी 6 मंथ का है और सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है. See, my dear friend, actually this is specifically targeted towards fever and vaccination. So I would just stick to that particular topic because there are lots of queries which needs to be solved. But in short, if I answer your query, nasoclear, not a machine, but nasoclear are the drops which you can put for any cold related issues. And उसके बाद में भी अगर cold settle नहीं होता है या तकलीफ बढ़ती है, it is always recommended to meet your local pediatrician. मिसेस रेशमा सावंत हैज अ क्वेश्चन. सरकारी टीके के अलावा प्राइवेट में कौन से टीके लगाने जरूरी है? As I said, Mrs. Reshma, see, private clinic, there are few of the vaccines like rotavirus, pneumonia. These are given at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. फिर 9 to 12 months में टाइफॉइड का TCV, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. 12 months पर there is hepatitis A. At 15 to 18 months वापस वो जो निमोनिया दिया था, निमोनिया का एक बूस्टर डोज आता है 15 to 18 months में. फिर 18 months
पे वापस एक हेपेटाइटिस ए का एक रिपीट डोज आता है, सेकेंड डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए। एंड चिकन पॉक्स के 15 मंथ्स ऑनवर्ड्स 2 डोजेस लगते हैं 3 मंथ्स अपार्ट, बीच में if you wish to तो स्वाइन फ्लू के 2 इंजेक्शन रहते हैं 1 मंथ अपार्ट। सो दीज आर द वैक्सीन विच आर recommended in in private hospitals which are not available in government hospitals. So if you visit any of your pediatrician, they give your file, and that in that file most of the pediatrician have mentioned most of the vaccines which are available which you need to give. Okay. सो मिस्टर दीप को क्वेरी थी कि वैक्सीनेशन के बारे में कुछ समझाए। सो आई थिंक हमने स्टार्टिंग में बहुत इलेबोरेटेड सेशन एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी गिवन। Mr. Boshir has given his phone number and have told them to call me. But sir, I think you will have to give the message over here on this platform, and I will be able to answer your queries. Okay. My dear friends, while going through all the questions, majority of the questions are coming in like cold and other related things like baby is getting irritable, baby is having cold. I would please recommend you all to just stick to our topic where fever and vaccination can be discussed. So I can answer these questions like कि सर्दी खांसी बहुत हो जाती है या बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है. But the thing is like कि these all things are not related to this topic. But anyways, in short, if I tell, see, from 6 months onwards, having fever, cough, cold, which is quite common at this age because of exploratory nature of the child. They keep on putting all the things in their mouth. They crawl, and they after crawling they put their hands in their mouth, and those all carries infection in the mouth. Either they can have loose motions or vomiting or cough, cold. These all are, and on top of it, their immune system is still learning. So these infections are quite common. So it would be better that each and every time or most of the time, in case the infection you feel like the things are going out of control, it's always recommended you see the pediatrician as soon as possible. This Nutan has a query that my baby is 4 months old and he remains very irritable all the time and pooping again and again. He cries while passing the gas. What to do? I think you'll need to see your pediatrician as soon as possible because frequent motions and baby being irritable. Is there any rashes or the child is dehydrated that you need to rule out, and accordingly you can treat further. And hope you have given the rotaviral vaccine because at this age, if you have started with some new food, then that might cause some infection also. Okay. Mr. Sachin Tyagi has a question. Vaccination government hospital में अच्छे रहती है या private hospital में अच्छी रहती है? See, Mr. Sachin, as I said before,
government hospital as well as private hospital both have their norms to store the vaccine. So the quality of the vaccine is always best, always good in both the ends, even in private as well as in government hospital. The difference is like in most of the private hospitals, doctor themselves gives the injection, whereas in BMC or government setup, the sister who are trained sister for vaccination, those trained sister gives the vaccine. This is one difference which is present. And secondly, in private hospital, you have some particular appointment slot and you have that time frame. On that particular time, you don't have to wait taking the child with you, and there are a lot of other things like anthropometric measurement and everything gets solved at private clinic, which might not happen at the government place because they have a lot of population which is draining in, so you might have to wait for a long, and these are the two only difference. But otherwise, if you consider the quality of the vaccine, the quality of the vaccine at both the places are good, equally good. So there is no compromise in government as well as in private hospital. In private hospital, most of the people have the thermometer on the in the fridge, which says like the usual norms of storing the vaccines is from 2 degrees to 8 degrees of Celsius. So most of them have the thermometer which shows. So in case of issues, they just get rectified so that the component doesn't get denatured. And the same thing happens with government setup also. So quality of vaccine is always good in both the setups. Mrs. सिमरन कासिम हैज अ क्वेश्चन लाइक 2 साल का बच्चा है और नेक्स्ट मंथ को उसको जब भी कोल्ड होता है उसकी आंखों से पानी निकलता है, क्या रीजन है इसके लिए, क्या एडवाइस दीजिए? सी, कोल्ड होगा तो आंखों से पानी निकलना वाजिब है बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज नेसोलैक्रिमल डक्ट. सो आंखों से जो भी टीयर्स वगैरह बनते हैं या आंखों से जो पानी निकलता है वो सारा पानी नाक के अंदर ही ड्रेन होता है. सो इफ देयर इज नेजल ब्लॉकेट मतलब कोल्ड हो गया है तो नाक बंद हो गई है या नाक में कंजेशन हो गया है, तो डेफिनेटली जो पोर है, जो नेसो लैक्रिमल डक्ट का पोर है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आंखों से वाटरिंग होना वाजिब है. जैसे जैसे सर्दी कंट्रोल में आ जाएगी आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा. इन केस there is excessive of watering, you can just wipe it off with a lukewarm water or just splash the plain water over it. And in case if the discharge is getting more sticky and the eyes are getting stuck, you need to clean it, or as per the advice of doctor you might have to start antibiotic eye drops. That's the only thing which can be done. uh, CBID एक्चुअली इनका क्वेश्चन है कौन कौन सा वैक्सीनेशन जरूरी है किड्स के लिए. So as I discussed, there are 8 specific this thing schedule which we need to follow. I'll just see if at all possible I can just okay. Yes. So now if it is possible for you to read, see यहाँ पर ये है, ये 6 वीक्स के लिए वैक्सीन, ये बर्थ के टाइम पर वैक्सीन दिया जाता है, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी. 6 वीक्स में जो पेंटा दिया जाता है BMC में, दैट इज DTWP हिप, एंड हेपेटाइटिस बी उसका पेंटा दिया जाता है, एंड OPV अलग से दिया जाता है. इफ यू गो फॉर प्राइवेट देयर इज वन होल वैक्सीन विच इज नोन एज EC6, जिसमें ये सब एक ही इंजेक्शन एक ही डोज में दिया जाता है. रोटा वायरस और पीसीबी, पीसीबी निमोनिया का होता है, रोटा वायरस लूज मोशंस का होता है. ये सारे 6 वीक्स पर होते हैं, 10 वीक्स पर होते हैं और 14 वीक्स पर भी होते हैं. देन कम्स यूजुअली 9 मंथ्स पर MMR या फिर MR जो गवर्नमेंट में दिया जा रहा है अभी, वो MR आ जाएगा. 6 to 9 मंथ्स में अगर स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन अगर देना है तो वो आप दे सकते हो, दैट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन. 9 to 12 मंथ्स में टाइफाइड का TCV इंजेक्शन आता है, 12 मंथ्स पर हेपेटाइटिस ए का है, 15 मंथ्स पर MMR और निमोनिया का बूस्टर रहता है और चिकन पॉक्स का फर्स्ट डोज आता है. फिर 18 मंथ्स पर BCG और ये अपना ट्रिपल वाला जो था पेंटा उसका एक बूस्टर आता है, एंड 2 इयर्स पर टाइफाइड का सेकेंड डोज आता है. बीच में हेपेटाइटिस का और चिकन पॉक्स के सेकेंड डोज आ जाते हैं. So these are all the schedule which has been followed by National Academy of
or Indian Academy of Pediatrics, which is the recommended vaccine as per 2016 guidelines. Okay. मिस्टर दौलत सोलंकी हैज अ क्वेरी कि डिलीवरी के टाइम पर क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है, वो फ्रैक्चर को कितने समय में ठीक होता है? सी वो डिपेंड करता है फ्रॉम बेबीज टू बेबीज, देयर इज सम और किसी को मैन्यूवर कैसे लगता है, यूजुअली 21 डेज के आसपास में होना चाहिए आइडियली, बट डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर एक बेबी को सेम टाइम में ये हो, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से फॉलो रखना रहेगा फॉर दैट। स्वाति जैन हैज अ क्वेश्चन, मेरा बेटा 3 साल का है और उसे बार बार बुखार आ जाता है और उसको अब कौन सा टीका लगेगा? जी, कैसा होता है स्वाति जी, बार बार फीवर आना एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। तो अगर अच्छा किस तरीके से है वो ऐसा है कि जितनी बार बुखार आ रहा है उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन लग रहा है, लेकिन उसका बॉडी वो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ा रहा है। जब भी इन्फेक्शन होता है अपना बॉडी उसको फीवर आता है, दैट इज द टाइम व्हेन आवर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ एंड it's developing resistance or immunity against that particular infection. So one way we can think of good part is like repeated infection from different organisms. So the immune system is getting new organisms to learn. एंड बुरा बात ये हो सकता है कि इनकेस अगर फीवर बहुत तेज आ जाता है, समझो 102 103 आ जाता है, तो ये उम्र में झटके आने के चांसेस रहते हैं। सो इट वुड बी मोस्ट एडवाइसेबल दैट जब भी उसको फीवर वगैरह आता है एक बार आप अपने पीडियाट्रिशियन को जाकर दिखा दीजिए और गेट द मेजर इलनेस रूल्ड आउट कि कोई मेजर खतरे वाले संकेत तो नहीं है। अगर वो नहीं है डोंट वरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल होना ही है। कमिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, लाइक 3 साल की उम्र पर अभी कौन सा टीका लगना है? सी ये चीज ऐसी है जिसमें उसके प्रीवियस वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह पर सारे वैक्सीन अब तक लिए हैं तो डायरेक्टली एट 5 इयर्स ट्रिपल का बूस्टर आएगा, जो डीपीटी बूस्टर रहता है वो, एंड एमएमआर का थर्ड डोज एज पर करंट गाइडलाइंस। इनकेस अगर आपने नहीं लिया है प्राइवेट से और आप लेना चाहते हो तो सारे जो प्राइवेट के वैक्सीन में लाइक चिकन पॉक्स का, हेपेटाइटिस ए का और निमोनिया का, ये वैक्सीन और टाइफाइड का, ये वैक्सीन के लिए आप आपके लोकल पीडियाट्रिशियन को मिल लीजिए, वो आपको डेट्स वगैरह दे सकते हैं, वो डेट्स को जाकर लगवा सकते हो आप। या फिर इनमें से कोई रह गया है तो वो पर्टिकुलर वैक्सीन को किस तरह से दिया जाता है उसका भी एक नॉर्म्स है, एक गाइडलाइंस है जो हमें दिया जाता है फ्रॉम Gavi as well as IIP's vaccine committee, that is ECVIP. So उनके गाइडलाइंस के हिसाब से जो कैचअप वैक्सीनेशन हम बोलते हैं उसको, जो उम्र चली गई है और वो उम्र के वैक्सीन बाकी रह गए, तो जो आगे की उम्र पर आते हैं वो टाइम पर पुराने वैक्सीन को कैसे कवर किया जाता है, देयर इज सम गाइडलाइंस फॉर दिस कैचअप वैक्सीनेशन। एज पर दैट गाइडलाइंस वी कैन सजेस्ट यू कि हाँ अभी ये वैक्सीन ये डेट्स को आकर ले सकते हो। अवनीश गुप्ता हैज अ क्वेश्चन, मेरी बीवी को बार बार जुकाम हो जाता है तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है? Mr. Avnish ji, I don't have any clue what your question is suggestive of, but anyways, coming to what I can understand is like कि मदर को अगर बुखार है या जुकाम आ जाता है तो बच्चे को कौन से इंजेक्शन लगाना है, if that is the question, बच्चे को वैक्सीन में सारे वैक्सीन लग सकते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनफैक्ट अगर बच्चे को सर्दी जुकाम भी है फिर भी बच्चे को वैक्सीन लग सकता है, बट यस फीवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीवर रहेगा तो हमें बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि बीमारी की वजह से फीवर है या टीका की वजह से फीवर है। लेकिन हल्का फुल्का सर्दी जुकाम रहता है उसके लिए वैक्सीन रोकने का कोई सेंस नहीं है। देयर इज नो सच गाइडलाइंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन एज द चाइल्ड इज इल। या the child is severely ill, say for example meningitis हो जाता है या severe high grade fever है 102 103, but some kind of bacterial infection is existing in our body like enteric fever, typhoid हो गया है या फिर meningitis है, tuberculosis है या कोई भी बड़ी बीमारी है, सेप्सिस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसे कोई भी मेजर बीमारियां हैं वो बीमारी में वैक्सीनेशन अवॉइड किया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीनेशन इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड कैन बी गिवन।
Shrikant Shaida has a question. मेरी बेबी 2.5 मंथ की है, वो बहुत रोती है और मिल्क भी कुछ नहीं, कुछ सजेस्ट करिए और वैक्सीनेशन के बारे में भी बोलिए प्लीज। सो मिसेस शायदा, आई presume that you have joined the chat since the time we have started. So in that case, most of your query about vaccination have been already resolved 2 to 3 times. Uh, Currently, when it is 2.5 month old baby, so it is 10th week roughly. So 10th week वाला जो पेंटा का बूस्टर रहेगा, चिकन ये अपना रोटा वायरस का लूज मोशंस के लिए और निमोनिया वाला वैक्सीन रहेगा। इन केस इफ दैट सेम वैक्सीन यू हैव गिवन एट 6 weeks also, तो 10th week अभी जो सेकंड डोज होगा, थर्ड डोज विल बी एट 14th week and then directly at 6 to 7 months. Uh, Very from Lubna Tabassum. मेरे हस्बैंड वैक्सीन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। उनका मानना है कि नेचर खुद ही बेबी को लड़ने के लायक बना देती है। वैक्सीन के बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, प्लीज सजेस्ट क्या खा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे बेबी पॉटी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टिंकी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ठंड से होता है। व्हाट यू से? ओके, सो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेचर अपने को लड़ने की क्षमता देती है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन फैक्ट मदर्स मिल्क हैज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इसीलिए आप अगर यूजुअली देखोगे फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे बार बार बीमार भी नहीं पड़ते हैं। इनफैक्ट अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई बेबी आ जाता है कि उसको हाई ग्रेड फीवर आया है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ अंदर का कुछ इम्यून सिस्टम को लेकर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज